Hello, GATE students. This is Dr. Khalil Khan welcoming you to Unacademy digital platform. Getting into PSU through GATE journey is a dream of many engineering aspirants. Fulfilling that dream, आज हमारे साथ है मिस्टर भास्वर चक्रवर्ती from West Bengal, Calcutta. First of all, many congratulations on behalf of Unacademy and our team, Bhaswar, to get into BARC, 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 Public Sector Unit or Government Job, you can say. And of course, उसके लिए अपना उनका खुद का एग्जाम, BARC का एग्जाम था, उन्होंने क्रैक किया and he got into there after the interview process. तो बच्चों, आज हम जानेंगे, राइट, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे भास्वर ने ये जो जर्नी है अकम्प्लिश की and what were his the strategy, plan, and how he has executed that plan to achieve this success. तो सबसे पहले वेलकम मिस्टर भास्वर टू एन अकेडमी एंड सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि व्हाट इज़ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, पर्सनल बैकग्राउंड, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे टेकिंग अप दिस प्रोग्राम. भास्वर, ओवर टू यू. Thank you, sir, for having me here. Sir, I did my schooling class 10th and 12th from Southpark High School from West Bengal, Kolkata. And Yes. then I got a rank of 7752, around 7752 in JEE Mains. And मैं IIST शिवपुर को एक गवर्नमेंट कॉलेज है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, उसमें एडमिशन लिया बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में. और मैंने सेकेंड थर्ड ईयर से अराउंड गेट का, और थर्ड ईयर में भी दिया था, उतना अच्छा नहीं हुआ था गेट में. फिर फोर्थ ईयर में जाके फोर्थ ईयर के अराउंड मैंने आप लोगों से पढ़ा और बहुत हेल्प हुआ. और अभी तो गेट भी थोड़ा अच्छा हुआ और बाहर भी हो गया. ठीक है. सो व्हाट वाज योर गेट रैंक, भास्वर? In 2024 my gate rank was 394 and score was 773. वेरी गुड. 394 से आपको कहीं कोई आईआईटी में भी एडमिशन मिला था क्या? यस सर, राउंड 6 में मुझे आईआईटी गुवाहाटी एमटेक सीएससी मिला था ओके, और वो वेरी मैंने एक्सेप्ट कर लिया था. वेरी गुड. देन फाइनली यू डिसाइडेड टू गो फॉर बार्क. यस सर, उसके बाद जब रिजल्ट आया तो बार्क के लिए वाई सो? अभी हाँ, डिसाइड. आप ये बताइए कि व्हाट मेड यू टू गो फॉर जॉब एंड नॉट एमटेक फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी? मुझे रिसर्च में थोड़ा इंटरेस्ट था और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब में भी. तो सीएस में गवर्नमेंट जॉब है, बट उतना लोग ध्यान नहीं देते हैं. हम्म. बार्क है, इसरो है, डीआरडीओ है और पीएसयूज भी बहुत सारे हैं. तो मुझे इसमें इसमें से कहीं पे जाना था, क्योंकि हम्म. यहाँ पे पे भी अच्छा है, सैलरी और काम भी बहुत अच्छा होता है. और तो मैंने गेट के साथ ही उसका प्रिपरेशन किया, थोड़ा अलग कुछ नहीं किया था. तो इंटरव्यू के लिए थोड़ा अलग किया था, बट रिटेन जो एग्जाम हुआ था उसके लिए गेट प्रिपरेशन ही था. तो इसलिए मैं बार्क के लिए तैयार हुआ था कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब और रिसर्च दोनों करना है. एक्सलेंट, एक्सलेंट, वेरी गुड. तो बच्चों सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भास्कर कह रहे हैं कि गेट की जर्नी के थ्रू ही उन्होंने बार का एग्जाम क्रैक किया. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2025, प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस कि गेट का आप थरो प्रिपरेशन करोगे, then that will help you for cracking many PSUs like bar. हाँ, उसका एंट्रेंस अलग होगा, उसका टेस्ट अलग होगा, लेकिन प्रिपरेशन जर्नी विल हेल्प यू फॉर दैट. यू डोंट हैव टू सेपरेटली प्रिपेयर फॉर अदर PSUs. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड दैट इज व्हाट भास्वर इज सेइंग. तो भास्वर बेटा, पहले ये बताइए कि आपके माइंड में कब ये थॉट इनिशिएट हुआ कि आई शुड राइट द गेट एग्जाम, आई शुड प्रिपेयर फॉर गेट एग्जाम? सर, मैंने थर्ड ईयर में, तो जैसे बोला था, थर्ड ईयर में ही मैंने गेट दिया था. तो ओके.
गेट से बहुत फिर मैंने गेट के बारे में जाना कि एमटेक के अलावा पीएसयूज भी है। तो हम्म। अगर मैंने अच्छा कर सका तो मुझे जॉब के लिए भी चांस मिलेगा, वेरी गुड। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो तभी से मैंने गेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। और हम्म। फाइनली फोर्थ ईयर में मैंने कोचिंग ली आपके टीम से, और वेरी वो गुड। मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। Yeah, excellent. So I'm very proud to and happy also to say that Bhaswar has undergone training, gate coaching with our team, which is at an academy. तो ये बहुत खुशी की बात है एंड वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो बेटा ये बताइए कि क्या आप ड्यूरिंग योर बीटेक प्रोग्राम आल्सो डिड यू ट्राइड फॉर आईआईटीज? क्या आपने जेई लिखा था जब भी? सर मैं जेई मेन में अच्छा किया था थोड़ा, बट जेई हाँ। एडवांस के पहले जब कोविड चल रहा था तब मेरा अच्छा। तबीयत खराब हो गया था, तो मैं जेई ओके। एडवांस नहीं लिख सका। अच्छा। तो तो जब आपके शायद मन में था कि ठीक है बीटेक प्रोग्राम के दौरान, आई मीन फॉर बीटेक आई कैन नॉट गो इनटू आईआईटी, लेकिन एमटेक के लिए सर, जरूर जाऊंगा, मे हाँ बी दैट सर। प्रोसेस माइट हैव बीन इनिशिएटेड एट दैट टाइम ओनली, राइट? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा अब जब थर्ड ईयर में आपके जब गेट एग्जाम लिखे थे तो हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर गेट एग्जाम विद सम कोचिंग और हैव यू गिवन ऑन योर ओन? और थर्ड ईयर मैंने कुछ कोचिंग नहीं लिया था, आई प्रिपेयर ऑन माई ओन। बहुत ठीक है, सारे ठीक। सब्जेक्ट्स भी बाकी थे, वेरी गुड। तो जितना हुआ था उतना ही दिया था। तो बहुत खराब रैंक आया था, 4,000 के अराउंड। हाँ ठीक है, फर्स्ट टाइम दे रहे हो और सेल्फ प्रिपेयर कर हाँ। किए हैं, तो ऑब्वियसली यू विल हैव सम हर्डल्स एंड हिकअप्स, सो फाइनल यस ईयर सर। इन फैक्ट। तो यस। नाउ कैन यू एग्जैक्टली टेल मी कि अगर शायद हो सकता आपकी जगह कोई और हो, कोई और स्टूडेंट हो, या शायद मैं भी अगर होता, तो when it comes to the matter of deciding whether should I go for job like BARC or should I go for MTech in IIT, so what basically promoted you, right, inspired you that I should go for BARC job and leave MTech at IIT? सर Because बार्क that's a का एक very important decision, I believe. यस सर, बार्क का एक एडवांटेज है कि Hmm. क्योंकि वो रिसर्च है, तो विथ टाइम वो लोग अपने खुद से एमटेक करवा देता है और फिर पीएचडी Oh, के लिए भी भेजता है। तो yeah, very good. This is a very yes, important point. Boys and girls, please keep a point note of this, what he is saying. हाँ बोलिए। और उसका एक डीजीएफएस प्रोग्राम भी है कि कोई एमटेक कर रहा है, उन लोगों का रिकमेंडेड इंस्टीट्यूट जो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मैड्रास है, वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं एमटेक, फिर वो ज्वाइन करे। तो हम्म। वार्क एकेडमिक लेकर भी बहुत इंटरेस्टेड है, और बाकी सारे पीएसयू भी मेरे ख्याल से एकेडमिक लेके बहुत इंटरेस्टेड है। तो वेरी गुड। जॉब करने के थोड़ी देर बाद 2-3 साल अगर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आ जाता है, फिर कोई हम्म। एमटेक करता है, तो मेरे लिए हाँ वो दैट आई बहुत नो, एडवांटेज स्पॉन्सरशिप हो। कैटेगरी में कर सकते हो आप। यस। यस यस सर। एग्जैक्ट। सो डू यू हैव एनी प्लान टू डू एमटेक आफ्टर सम टाइम वर्किंग इन बार्क? Yes, sir. If I get chance after 2-3 years, when I become more mature and when I require more understanding of the subjects, I वेरी plan गुड, to do MTech. वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा बताइए कि पहले, सबसे पहले, कि बार्क का एग्जाम आपने कैसे प्रिपेयर किया अदर देन गेट? क्योंकि आप गेट भी लिखे, गेट में भी आप सक्सेस है, रीजनेबली गुड स्कोर है, गुड रैंक है, और बार्क के लिए भी आपने प्रिपेयर किया। तो व्हाट एग्जैक्टली हैव यू डन एडिशनल इन एडिशन टू गेट प्रिपरेशन फॉर बार्क? कुछ और एडिशन आप किए हैं वो बताइए ऑडियंस को। यस सर। बार्क का एक रिटन एग्जाम होता है। पहले जो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है वो दो तरह से ले जाता है। एक होता है कि गेट से भी कोई शॉर्टलिस्टेड हो सकता है इंटरव्यू के लिए, और उनका खुद का रिटन एग्जाम भी है। सो मैं जब गेट लिखा था, मैं जब फॉर्म फिलअप किया था, दोनों के लिए ही ऑप्ट किया था, गेट और अच्छा। उनका रिटन एग्जाम। तो ओके। गेट के 1 मंथ बाद शायद बार्क का एग्जाम हुआ था, सम वीक्स, 1 मंथ और 3 वीक्स अराउंड। तो उसका पैटर्न है कि 2 आवर्स में 100 क्वेश्चंस करना है। तो हम्म। टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बट हम्म। और उसका डिसएडवांटेज है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होता, ओके। कॉन्फिडेंशियल है। बट मैं जो इंटरनेट से देखा और कोर्स देखे, बाकी जो लोग इंटरव्यू दिए थे, तो एक एडवांटेज है कि दे आस्क सम मेनी रिपीटिंग क्वेश्चंस ऑफ गेट एंड मेनी रिपीटिंग क्वेश्चंस ऑफ इसरो एंड अदर एग्जाम्स। सो हम्म। even if they change the question, they only change the values, like the करेक्ट। basic concept remains the same. एग्जैक्टली। And
And another advantage is I tried to focus more on accuracy than on doing more number of questions. हम्म। So, because as there is a negative marking also, around ठीक है। +3 and -1, I wanted to correct the things that I know and instead of getting more negative. So, तो बार्क एग्जाम में मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया था, बट मोस्टली मोस्ट ऑफ देम अराउंड 90% वेर करेक्ट। तो रिटेन के लिए बस सिलेबस एज कंपेयर करूँ गेट से तो 80% सेम है, थोड़ा एडिशनल सब्जेक्ट है लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ग्राफिक्स से एक दो क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स, एंड सम अराउंड एमएल एआई से दो एक तीन क्वेश्चन, बस उतना ही। बट 90% इज सेम विद गेट। ओके। सो जो एडिशनल जो सब्जेक्ट्स है वो यू मीन टू से दे आर लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन यस, लर्निंग भी है। ओके। यस सर, तो तो इस बार ये जो नहीं है। एडिशनल सब्जेक्ट्स है इसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, कहाँ से प्रिपेयर किया? सर ये एडिशनल सब मैंने देखा कि 10% ही एडिशनल सब्जेक्ट है, तो मैंने सोचा उतना प्रिपेयर करने की इसे जरूरत नहीं है। अगर मैं गेट वाला सब्जेक्ट से अच्छे से प्रिपेयर करूँ और मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आता था, तो ये दो मिला के ही मेरा 91-92% हो जा रहा है, सिलेबस हो जा रहा है, तो मैंने वो सब सब्जेक्ट देखा भी नहीं सच में। वेरी गुड, वेरी गुड। So finally, in a nutshell, you mean to say that essentially, effectively, if you are preparing well for GATE, that is more than sufficient enough for appearing for and cracking BARC exam. यस सर, अच्छा रिटेन बेटा, एग्जाम। और एक ये बात भी बताइए कि ये जो बार्क का जो रिक्रूटमेंट होता है, डज इट कम एवरी ईयर? यस सर, एवरी ईयर बार्क ओसीएस प्रोग्राम होता है। Boys and girls, please make a note. Those who are writing for GATE 2025, you should not forget to write BARC. That is also a very good equal opportunity. And he says that some percentage of seats will be reserved based on GATE exam. Am I right? GATE result. यस सर, यस सर, So इस that is साल also गेट का कट ऑफ 812 था। 8.2 tha. Okay, very good. So based on GATE score also, there is a possibility that you can directly appear for direct recruitment on BARC. लेकिन I think अगर direct recruitment हो या फिर BARC के exam के through हो, interview तो compulsory है ही। इंटरव्यू, हाँ यस, इंटरव्यू इज कंपल्सरी। तो चलिए भास्वर, अब नेक्स्ट आते हैं इंटरव्यू पर। आप पूरा डिटेल में शेयर कीजिए अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ताकि आवर गेट एस्पिरेंट, दोज हु आर लिसनिंग और दोज हु विल वॉच इट लेटर, दे विल गेट बेनिफिटेड। बोलिए। यस सर, तो बार्क इंटरव्यू होता है मुंबई ट्रेनिंग स्कूल बार्क का, अनुशक्ति नगर में। तो बार्क ट्रेवल अलाउंस दे देता है एसी 3 टायर का, वेरी गुड। फॉर्म फिलअप करने पे। तो एक 1 मंथ इंटरव्यू होता है, कैंडिडेट कभी भी डेट ले सकता है, कोई भी डेट अगर अवेलेबल हो तो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। वहां पे जाके 3 दिन के लिए, मतलब जो जिस दिन इंटरव्यू है एक दिन पहले और एक दिन बाद का स्टे भी मिलता है हॉस्टल पे। तो इंटरव्यू में इंटरव्यू में पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब जिस दिन आप जाओगे इंटरव्यू के लिए, और एक टोकन नंबर देगा कब आपका इंटरव्यू नंबर है। पैनल रहता है, मेरे या दो पैनल था, पैनल 1 और पैनल 2 सीएस में, और साइमल्टेनियसली 2% इंटरव्यू देते थे, और मैं पैनल 1 में था। और इसी तरह मैंने इंटरव्यू बिगिन किया। तो इंटरव्यू में अराउंड 6 पर्सन रहता है, 6 पैनलिस्ट, दे आर ऑल एक्सपीरियंस, मतलब काफी मुझे देख के लगा एक्सपीरियंस है बहुत ही। और एक चेयरमैन रहता है जो सेंटर में बैठता है और वो शुरू करता है इंटरव्यू। तो वो पहले सिचुएशन को बहुत इज कर देता है, आपको थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस पूछ के, जैसे कब, हाउ वाज योर लास्ट सेम, लाइक इज दिस योर फर्स्ट ट्रिप टू मुंबई। सो दे विल मेक यू फील कंफर्टेबल, वेरी means, गुड। and the point that I feel the good about that interview was, it will not feel like an interview, it is more of a discussion, like they will try to analyze your depth. So, और एक चीज था कि इंटरव्यू में मैंने बहुत सारे कभी अनहर्ड क्वेश्चंस भी सुना जो मैंने कभी बुक में नहीं पढ़ा। और जैसे कि फॉर कभी मैं, एग्जांपल, कैन यू टेल वन क्वेश्चन? yes sir, like they asked, what is the size of, where there is heap stack code and data, we know in a process हाँ। parts. So they asked
what is the size of heap in a computer? So I Okay. told that exactly I don't know. So they then twisted it again. So suppose I have a computer of some memory and another my friend has computer of a bigger, larger memory. Will the heap size be same? Or so this I was unaware of. I Yeah, another basically it's like yes, a practical question, right? yes So you sir. should have some practical exposure. That is what he's trying to say. हाँ बोलिए और next. Yes, sir. Another question they ask, which we have studied, but at that moment, one may feel that it was a difficult question. Is that which was a very good question, that how we store infinity in computer. Oh, So the I remember the floating point representation, but it was not directly related. correct. So the Bhaswar, you got, I think there is some problem at your end. Just check it, Bhaswar. Are you able to listen, Bhaswar? sorry, sir, the meeting No got problem. uh, हाँ, okay, no issue. So you are uh, telling about the second question, floating point, वो तो हो गया है. फिर yes, उसके बाद बोलिए और. हाँ, हाँ सो मैं शुरू से जाता हूँ कि पहले मुझे बोला व्हाट सब्जेक्ट्स हैव यू प्रिपेयर्ड. So right. I wrote the subjects I prepared like DSA, network, DBMS, and OS. हम्म. And then they started asking question on C. So he asked, why do we include header files in our program? I mentioned the reason, and then they asked, what will happen if the two header files have the same kind of code or function? I mean, Okay. there is a conflict. Yes. So I told about conditional preprocessors like hash if def, but I couldn't elaborate more on this, and they didn't waste time on that and shifted the topic. उसके बाद मुझे एक प्रोग्राम करने दिया, एक पेज दिया और पेन दिया, और एक हम्म. प्रोग्राम करने दिया कि फास्ट 10 प्राइम नंबर्स आपको रिटर्न करना है. तो मैं कोड लिखने गया, तो थोड़ा नर्वस था, तो हम्म. इधर उधर घूम रहा था, तो बोला पहले लॉजिक एक्सप्लेन करो फिर आप कोड लिखो. तो लॉजिक एक्सप्लेन करने के बाद कोड लिखा, तो मैंने एन रू टेन में कॉम्प्लेक्सिटी में मैं कोड लिखा. सर ओके. आवाज आ रहा है? सर आवाज आ रहा है? हाँ, आ रही है, कंटिन्यू. ठीक है. एन रू 10 में मैंने कोड लिखा, और उसके बाद वो बोला थोड़ा ऑप्टिमाइज करो. तो मुझे तब एल्गो पता नहीं था, तो मैंने बाद में चेक किया, वो एक सीवा विराटोथिन्स एक स्पेसिफिक एल्गो है, वो ढूंढ रहा था. वो हम्म. मुझे नहीं आया तब. फिर नेक्स्ट सी में और कुछ नहीं पूछा, फिर आया नेक्स्ट आया डीबीएमएस. ओके सर. तो डीबीएमएस में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, लाइक व्हाट इज आर डीबीएमएस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, हम्म. एंड गिव एग्जांपल ऑफ ईच. फिर नॉर्मलाइजेशन के बारे में, और फिर लास्ट में एक क्वेरी लिखने दिया, और वो एक वे में मैं लिखा और बोला दूसरे एक वे में लिखो आप. तो वेरी गुड. दे वांटेड अ स्पेसिफिक थिंग फ्रॉम मी. ओके. सो डीबीएमएस अच्छा गया था मेरा. फिर हम्म. आया डीएसए. डीएसए में मैंने मुझे पूछा व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स, व्हाट आर हम्म. एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, एंड हम्म. फाइनली एक कोड करने दिया कि यू हैव टू रिप्रेजेंट स्टैक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पुश एंड ओके. पॉप ऑपरेशन. सो मैंने बोला मैं एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन करूँ, तो वो लोग बोला एरे बेस्ड का डिसएडवांटेज यू नो. तो मैंने बोला हाँ, तो बोला लिंक लिस्ट करो. तो लिंक लिस्ट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन मैंने किया, वो ठीक गया. फिर वो हीप वाला क्वेश्चन मुझे पूछा, क्योंकि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन आ गया था. तो डीएस से भी ऐसा गया. फिर नेटवर्क में मुझे फ्री वे हैंडशेकिंग के बारे में पूछा. अ, और उसके बाद अ, थोड़ा उधर भी ट्विस्ट किया, लाइक दे आस्क्ड अ स्पेसिफिक थिंग लाइक इफ सर्वर इज डाउन हाउ क्लाइंट विल नो.
If client is down, how server will know. They focus more on the practical aspects. Like they Okay. want to know how you well do you know the real time applications, real life applications of these concepts. Yeah, एंड yeah. फाइनली मुझे कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछा, वो भी प्रैक्टिकल में था, लाइक हाउ विल यू कनेक्ट कंप्यूटर टू अ एलईडी बल्ब एंड मेक इट ग्लो, हाउ विल यू Hmm. टर्न ऑन और ऑफ एन एलईडी बल्ब, like Hmm. this type of questions were asked by them. What is Hmm. hardware abstraction, what are device driver, and Hmm. finally वो infinity वाला क्वेश्चन मुझे पूछा था. Yeah, yeah. So by and large, can we say that जो अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो that will be sufficient for reasonably sufficient for attending the interview? यस सर, गेट का प्रिपरेशन, और मुझे लगता है थोड़ा बेसिक डीएसए और सी का कोड लिखना आना चाहिए, हाँ, लाइक कोडिंग बेसिक आना क्वेश्चन. चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और जैसे आपने थोड़ा. कहा थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी हाँ, होना यस. चाहिए। या यस सर. माय डियर स्टूडेंट, स्टूडेंट्स. प्लीज follow what Bhaskar is saying and try to keep these points in mind while if you are also planning for example companies and public sector units like BARC. हाँ Bhaskar। तो थोड़ा लैब पे फोकस करना चाहिए जो कॉलेज में ठीक है। होता है, जी जी। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों में, क्योंकि ठीक वो है। लोग बहुत सारा रियल लाइफ एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल कोडिंग ये सब पूछता है, थियोरी भी पूछता है. तो ओके। गेट का सब्जेक्ट है, कुछ अलग नहीं है, बस वो बहुत डिटेल डेप्थ में जाता है हर ओके ओके। पॉइंट के लिए. हम्म। अच्छा ये बताइए कि व्हाट इज द काइंड ऑफ वर्क दैट एक्चुअली, बिकॉज अब अगर आप बाहर बाहर सुनिए देखेंगे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, राइट? यस सर. तो टाइटल से ये लग रहा है कि एटॉमिक रिसर्च है वहां पर, मोर और लेस लाइक केमिकल समथिंग लाइक दैट। लेकिन कंप्यूटर साइंस का रोल क्या है? लाइक आई एम आल्सो बिट इंक्विजिटिव अबाउट इट। तो क्या आप थोड़ा इस पे लाइट डाल सकते हैं? कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस? सर कंप्यूटर साइंस का रोल है, वो सब जो प्लांट है वो मेंटेन करना होगा कुछ सॉफ्टवेयर से. फिर वहां पे तो मैन नहीं जा सकता, तो रोबोट्स मेकिंग, एआई एमएल वो सब तो लगेगा ही. तो और अब तो नया ट्रेंड है, मतलब एटॉमिक एनर्जी से जो है क्वांटम कंप्यूटिंग, उस पे भी रिसर्च हो सकता है. तो ये सब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वहाँ पे चलता है, और एक सेमिस्टर उनका ट्रेनिंग में भी है जो ये सब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से डील भी करता है. तो आपका जो पोजीशन है वो बेसिकली एज ए रिसर्च एसोसिएट है? यस सर, साइंटिफिक ऑफिसर है. साइंटिफिक ऑफिसर है। सो प्राइमरली आपका रोल मोर और लेस इनटू रिसर्च और डेवलपमेंट? मोर और लेस इनटू रिसर्च. ओके, मोर और लेस इनटू यस रिसर्च। अच्छा ये भी बताइए कि जो आप इंटरव्यू था, आपका इंटरव्यू, बिकॉज सम सर. स्टूडेंट वाज आस्किंग, राज कुशवा वाज आस्किंग के द इंटरव्यू विल बी इन हिंदी और इंग्लिश? सर वो ठीक पता नहीं, बट मुझे ऑप्शन नहीं दिया, मैंने इंग्लिश में ही वो लोग बात करने शुरू किया, और जितना ओके। मुझे लगा तो इंग्लिश ही होगा. Yes. So boys and girls, please understand the interview will be in English only. They will not basically ask in Hindi. So that's what I have been telling all of you in my classes, of the classes, YouTube channel, special free classes में ये announce कर रहा हूँ. Particularly computer science IT students के लिए English speaking skills are too important. Whether you are targeting national level or international level or basically jobs at any level, आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है इन ऑल एस्पेक्ट्स. तो जितने भी हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी अपील है, प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस पॉइंट एंड ट्राई टू वर्क फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश. ओके. अच्छा ये बताइए कि वैकेंसीज का, सम स्टूडेंट वाज आस्किंग अबाउट वैकेंसीज, कैन यू टेल मी हाउ मेनी सर वैकेंसीज आर the देयर? interesting thing about scientific officer is there is no limit to vacancies. If they like the candidate, they will select the candidate. Wow, this is excellent, amazing. Look at that, boys and girls, what he's saying. He's saying that there is no limit to the number of vacancies. अगर वो लगा कि आप में potential है, capability है, they will absorb. Am I right? Yes sir, That's absolutely. what. So therefore, this is like open offer है ये. Anybody like blank check. Anybody, if you have the potential capability, then that means you can basically get absorbed. Somebody is asking, Sheila Kumari is asking, is there any age limit for BARC? Bhaskar. Yes sir, I think around 27, 28. I exactly don't know, but age limit is there like any other government job.
has Okay. an age limit. Yeah, Sheila Kumari, I hope your doubt is taken by Bhaswar. Anybody has any type of question, please raise it in the chat box so that I can ask to Bhaswar and he will clarify the doubts. तो बेटा भास्वर आगे बोलिए कि हाउ डू यू सी बिकॉज करियर आई बिलीव इज नॉट लाइक गेटिंग अ जॉब करियर इज a sort of profession or occupation which is going to consume some essential part of your life where you would like to see the opportunities that are available for you to explore what you want to be down the line 5 years 10 years तो आप कैसे देखना चाह रहे हो अपने आप को 5 years 10 years 15 years from now I want to be more accustomed to the works they do and explore deep into it, how much work has been done on which sectors, and what is the potential of that department or sector of BARC, how I can improve that sector or path, and okay subjects that will interest me. I want to explore on that area and make research and make contribution to the nation. So, excellent because research work is like there is there is no limit, like it's always expanding. So I want to venture into this research domain and carry out what I can do to yeah up very to good my capabilities. Yeah. Jay Prakash is asking, can you elaborate on the pattern of exam? कि कौन सा मतलब what is exactly exam pattern of BARC? Or written exam, or okay, so Written. written exam is as I mentioned, 120 minutes, 2 hours, 100 questions. So mostly get syllabus, get previous year paper questions, ISRO previous year paper question, other government exam previous year paper questions, and some extra subjects like I mentioned. Mm-hmm. The total marks is 300 plus 3 for each question. So 3 into 100, 300, and minus 1 for each wrong answer. Mm-hmm. The cutoff this year was 107, I think, around Okay. 107. I scored 145. Uh, Excellent. so the it varies according to the difficulty of the paper. This year the paper was a little difficult, and the questions they were lengthy. Like there were many questions, 3 or 4 statements given. How many of the statements are correct? Okay. All are MCQ, no MSQ. But this way they are incorporating the MSQ. Like Yes, how yes, many yes. statements are correct? Correct. So Like one and two, two and three, one, yes, two, two three, and like three. that. Yes, Exactly, yes, sir. exactly. More or less, it And is like MSQ only, yes, but sir. formulating in MCQ. Yes, Yes, correct. sir. अच्छा ये बताइए somebody is asking eligibility criteria. Who are all eligible for BARC exam? Who are in their final year and who will get their result uh, within this year and can appear for work, and who have passed their BTech are also can appear for work. Okay, very So good. अच्छा वर्कलोड कितना रहता है जनरली somebody is asking but पुष्पा that essentially depends on that no problem वर्कलोड का उतना important नहीं है is there any specific section for aptitude is there any aptitude no, sir, section no aptitude no aptitude, but Jay Prakash there mathematics is no is there. aptitude yeah Mathematics is there. mathematics Probability, calculus yes is there. yes so this is the discussion that we had सो माय डियर स्टूडेंट्स नटशल में कहना यह है कि वही जो हम पहले से ही कहते आ रहे हैं फिर से वही कहना चाह रहा हूँ विद थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ भास्वर्स माध्यम से आपको यह कहना चाहूंगा कि डू वेल प्रिपरेशन गुड प्रिपरेशन ऑफ गेट सो दैट यू कैन एक्सप्लॉइट अपॉन दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मल्टी फेसेटेड अपॉर्चुनिटीज विद गेट जर्नी ये एक्सप्लॉइट कीजिएगा and try to follow the advices which Bhaswar has given for his successful journey of GATE and also BARC, right? So GATE, I mean, somebody was asking what was his GATE marks. So let me tell you that he basically got 390 plus rank in GATE 2024. He got admission into IIT Guwahati MTech Computer Science, but he preferred to join BARC for his obvious reasons. So finally, ये बताइए Bhaswar, your advice, piece of advice to the GATE aspirants of 2025. आप अपने दिल की बात बताइए क्या कहना चाहोगे आपके जूनियर्स को जो 2025 में गेट लिखने वाले हैं For GATE, follows has notes. They are very helpful. I feel that because and make short notes of each subject.
Like they are also very helpful for final time revision, like the formulas, the diagrams in computer architecture, digital logic, the short formulas which you require, and also try to do little coding which it requires in interview, or in gate it also helps. Like there are some code based question, like given a code you have to find the output or some missing lines. So all the basic C question, all the basic data structure question one should be familiar with. And also try to refer a book. It is not mandatory, but if you can refer a book, it helps in developing better understanding of the knowledge, any standard book for any subject. And ultimately, the most important thing which helped me was follow the previous year question, do previous year question 1 or 2 times, and get comfortable with it. Like they are very helpful. And what I have neglected was aptitude. Don't neglect it because it cost me a lot of marks. I got only 5 marks out of 15 in aptitude. Acha, Jayprakash is asking one question. Did BARC prefer new gate DA paper? अगर कोई गेट डीए पेपर लिख रहा है, उसमें क्वालिफाई हो रहा है, तो बार्क क्या उसे भी कंसीडर करेगा? This year they have no openings for DA. They are ओके. only taking computer science paper and other streams, but no DA. So boys and girls, please make a note, important note. Those who are writing gate DA, please think of writing gate CSIT also, because for PSUs like BARC, they are not considering D as of now. हो सकता है next time consider करे, we don't know. But as of now, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ. Somebody is asking एज लिमिट है गेट एग्जाम के लिए? बेटा गेट एग्जाम के लिए तो देर इज नो एज लिमिट. एमटेक के लिए भी मैं समझ रहा हूँ कोई एज लिमिट नहीं है. सो यू कैन थिंक ऑफ राइटिंग गेट. और भास्वर, आप क्या कहोगे दो स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग टू गो अब्रॉड फॉर डूइंग एमएस, राइट, एंड दोज हु आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड गोइंग फॉर जॉब? आपकी पर्सनल एडवाइस क्या होगी वो स्टूडेंट्स के लिए? सर डिफिकल्ट गेट क्वेश्चन, लेकिन बोलिए आप अपने माइंड में क्या है फॉर मोटिवेशन ऑफ सर द मेरे स्टूडेंट. लिए स्टूडेंट को जो कंफर्टेबल लगता है, स्टूडेंट को जो प्रेफरेंस है वही करना चाहिए. लाइक लाइफ में रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो मैं मास्टर करूंगा, या मास्टर सिर्फ वो लोग करते हैं जिसे कुछ नहीं मिल रहा. दोनों ही गलत है. जिसे पढ़ाने की शौक है या जिसे हायर स्टडीज के बारे में इंटरेस्ट है, वो लोग मास्टर करिए. और दोज who want to do job, those who want to solve industrial problems, real life problems, can go to job. And for going abroad it is also a good decision, but it requires a lot of maturity, as surviving abroad is comparatively a little tough, but still it is a great decision there. But go to those colleges which are well established and are in the world rankings, and uh, avoid those colleges which take a lot of money. Yeah. So finally, Sheila Kumari and Vikash Kumar is asking the same question. क्या मैं पैनल में हिंदी में इंटरव्यू दे सकता हूं या दे सकती हूं? अभी हमने कहा कि पैनल में he has faced the interview purely in English. So my dear students, repeatedly I'm telling you कि अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन इंप्रूव कीजिए. आपको अपॉर्चुनिटी है. यू कैन स्टिल इंप्रूव अपॉन इंग्लिश, स्टिल यू कैन लर्न इंग्लिश. अगर जब आपने कंप्यूटर साइंस में एनरोलमेंट किया है तो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट. at every nook and corner you cannot escape from English. आप अगर आप मान लीजिए आपने एमटेक किया and then later you have to work in MNCs, later you may have to work in PSUs, and there the standard language will be English. How can you escape from English, right? So please concentrate on this and try to improve upon your English, and make sure that you don't have any English as a lacuna for you. Okay. So I think he has answered all the nooks and corners. Interview questions already, he has already told Vamshi, you can watch the video. He has explained, Bhaswar has excellently explained the whole BARC journey, written test se lekar, preparation, and then interview questions, everything he has done. And I'm very thankful to you on behalf of our team. Once again, congratulations to you and your family. And we pray that you have excellent career in future, and you serve the country and serve your parents. So our congratulations to you as well as your parents, Bhaswar.
Okay. Yes, Thank you sir. so Thank much you, sir. again My for parents taking and your me are time. very grateful to you, sir. Okay. Thank you so much. We are very happy and God bless you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.